Hello everyone. Let's discuss Kepler's law in this video. Kepler's law डिस्कस करने से पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बार देख लेते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन says every mass, let's say mass m1 and another mass, let's say m2, which are at a distance of r, are attracted towards each other by a force given by g m1 m2 by r square. Okay, so the expression I just wrote is Newton's law of gravitation. अब इस expression को देख के let's analyze our situation. Let's say the mass of earth is m, that is a small m, mass of sun is capital M, and the distance between these two is r. So force on earth will be g capital M small m by r square. अब अगर इसे हम कंपेयर करें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि F इज इक्वल्स टू ma है, सो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सन विल बी gm बाई r स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने दो लॉज को कंसिडर किया है. पहला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इन दोनों को कंपेयर करके एक्सेलरेशन इज gm बाई r square. Based on this, we can say कि acceleration is inversely proportional to the distance between the planet and the sun. इसका क्या मतलब है? If let's say there is another planet here, जो कि बहुत दूर है sun से, let's say r dash distance पे है and r dash is greater than r, so it will have lesser acceleration as compared to the acceleration of earth, जिसका कि more acceleration. Based on acceleration is equals to gm by r square, or acceleration is inversely proportional to the distance between the planets. The second conclusion is the direction of acceleration is always towards the sun. ये कैसे? Because the planets are in circular motion. If I draw the path of the second planet, वो भी सर्कुलर मोशन में है. सर्कुलर मोशन में आप सभी को पता होगा कि एक्सेलरेशन इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. यहाँ पे इस केस में सेंटर पे सन है. ओके, इसको कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अब अगर हम सेंट्रिपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड. देखो, एज पर ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज gmm by r square and centripetal force mv square by r, है ना. m and m will get cancelled, r square का स्क्वायर चला जाएगा, r get cancelled, v square is gm by r, और v that is speed of the planet, speed जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है will be root over gm by r. तीसरी चीज हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि every planet revolves around the sun in a circular orbit. I hope you guys are fine with the expression for acceleration and speed. Let's jump into Kepler's law. That is the first law. First law says all planets move in an elliptical orbit with the sun at a focus. अब आप कहोगे कि सर आपने अभी expression for speed and acceleration जो है वो circular orbit consider करके किया है और अब हमें आप elliptical orbit दिखा रहे हो. तो इसका truth यही है कि those elliptical orbits can be considered as circular orbits for calculation purpose at our level. For higher levels आपको elliptical orbit consider करके derivations करने होंगे, but JEE and Neet के syllabus में you can consider them as circular orbits. Let's discuss circular orbits and elliptical orbits. Elliptical orbits में क्या है कि दो एक्सिस होते हैं. एक मेजर एक्सिस जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, this is major axis, and the other one is minor axis. Minor because it is smaller
than the major axis. Half the length of that major axis is called as semi major axis, जिसको कि हम A मान लेते हैं, और half the length of the minor axis is called as semi minor axis. Semi means half, okay? तो इसको हम B मान लेते हैं. And if I write the equation of the ellipse, in this case it will be x square by a square plus y square by b square is equals to 1. इसी में अगर a is equals to b कर दिया जाए, if, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x square by a square plus y square by a square is equals to 1, which is the equation of a circle. और सर्कल में आप देख सकते हो कि रेडियस सेम रहता है एवरीवेयर और द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज सेम थ्रू आउट. ओके, सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स वेयर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर ऑफ सेम लेंथ, दैट इज a is equals to b. ओके, यही रीजन है कि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डेरिवेशन में ऑर्बिट को सर्कुलर मान लिया था, क्योंकि बोथ A and B are nearly equal. So for our level of JEE and Neet, we can consider them to be equal और सारे डेरिवेशंस जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में कर सकते हैं. But as per the first law, all planets move in elliptical orbits with the sun at a focus. Okay, ये ट्रुथ है, यही लॉ है कि सारे प्लैनेट्स जो हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन. डजंट मैटर वेदर A is nearly equal to B, but it is elliptical. Okay, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने A को B के इक्वल मान के सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट करके अपने सारे डेरिवेशंस कर लेते हैं. Now let's see how the planet revolves around the sun in elliptical as well as circular orbits. I hope everyone is fine with the first law, जो कहता है every planet revolves around the sun in elliptical orbits. Okay, let's move to the second one, that is the second law, Kepler's second law. It says the radius vector from the sun to the planets sweeps equal area in equal time. Radius vector क्या है? Position vector of the planet with respect to the sun. Let's say planet की, यहाँ पे इस केस में हमने अर्थ को कंसिडर किया है, लेट्स से इसकी पोजीशन P1 है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू द सन, ये हो गया रेडियस वेक्टर, इसको बोल दिया. ठीक है, लेट्स से प्लैनेट मूव्स टू दिस पोजीशन P2. सो फ्रॉम P1 टू P2 एरिया स्वेप्ट बाय दिस वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, कितना हो जाएगा, दिस मच. लेट्स इट मूव्स टू अनदर पोजीशन P3. ओके, सो P1 से P3 कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, स्वीप मतलब कवर करना, फ्रॉम P1 टू P3 बाय द रेडियस वेक्टर. सो दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट व्हेन द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम पोजीशन P1 टू P3. सेकंड लॉ कहता है कि एरिया स्वेप्ट इज ऑलवेज इक्वल इफ द टाइम इज इक्वल. इसका क्या मतलब है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स से फ्रॉम P1 टू P3 it takes time T1 and the planet from position P4 to let's say P5 also takes time T1. If this is the case, then the area swept by the position vector or you can say the radius vector, जो कि सेकेंड केस में ये एरिया है जो कि अभी मैं शेड कर रहा हूं, these two areas will be equal. और in simpler terms you can say, second law को आप simply कह सकते हो, aerial velocity is constant. Aerial velocity is constant. इसका क्या मतलब है,
dA by dt is constant. इसका भी कोई मतलब होना चाहिए. इसका मतलब है एरिया कवर्ड. कौन कर रहा है एरिया कवर? रेडियस वेक्टर. पर यूनिट टाइम is constant. Let's discuss some observations of this one. As in our case from P1 to P2, it has covered more distance, whereas from P4 to P5 it has covered less distance. तो हम कह सकते हैं while moving from P4 to P5 it was having lesser speed, whereas in this case it had higher speed. इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जब प्लैनेट सन के करीब होता है एरिया स्वेप्ट कम होती है. सो एरिया स्वेप्ट कम है और लेकिन एरिया इक्वल होनी चाहिए फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो तेजी से मूव करता है, हायर स्पीड से मूव करता है व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन. Whereas when it is far away from the sun, when the planet is far away from the sun, area swept is higher. That is why it moves slowly, ताकि for equal intervals it covers the same area as in the case of a lesser distance one. तो इसको conclude कर देते हैं. When the planet is near to the sun, it moves faster. When the planet is away from the sun, it moves slower. अब मैं एक रीजन बना देता हूं जिसमें we can say कि it moves faster. Let's say this one. In this region, it moves faster. Why faster? Because the area swept is lesser, है ना? And for it to be equal, तो इसको यहाँ तेज मूव करना होगा. And in the other region, it moves slower. Let's try to visualize the same thing with the help of animations. Animation में जैसा कि आप देख सकते हो, when it is closer to the sun, the planet moves faster, whereas when it is away from the sun, the planet moves slower. इसका रीजन सिंपल सा यही है, रेडियस वेक्टर जो है इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल टाइम, और जब वो सन के करीब होता है तो एरिया स्वेप्ट इज वेरी स्मॉल. दैट इज वाई टू कवर अ लार्जर एरिया इट मूव्स फास्टर. नाउ लेट्स जंप इनटू द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ सेज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट. यहाँ पे एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन सिंपल सा देख लेते हैं. लेट्स से मास ऑफ अर्थ इज m एंड मास ऑफ सन इज कैपिटल M. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? Gm by r स्क्वायर. सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? स्मॉल m v स्क्वायर by r. इफ वी सॉल्व दिस वन, हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी g कैपिटल M by r. रेडियस r है जैसा कि यू कैन सी हियर. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड इज total distance, that is circumference, 2 pi r by v. इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. t स्क्वायर इज 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर by v स्क्वायर. v स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन टू द सेकेंड इक्वेशन पुट करते हैं, तो वी विल गेट t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर gm by r, that will go in the numerator r, जो कि 4 pi square r cube by gm है. As we can very clearly see that square of the time period is directly proportional to the cube of the radius, or you can say the distance of the planet from the sun. तो थर्ड लॉ का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है. ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके स्पीड निकालनी है, एंड देन यू नीड टू यूज द बेसिक फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड. सो आई होप यू गाइज आर फाइन विद इट. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एवरीवन.